Hello students, now in this video we are going to discuss our geography chapter natural vegetation and wildlife. Students, this chapter is important in both two way for you. And first is you will get the MCQ section from this chapter of 2 marks, and second, this chapter's some part is included in interdisciplinary project. So you have to read this chapter very carefully and then try to make your project beautifully decorative. And next you have to prepare multiple choice questions sections also with the help of this chapter, this video. So let's start this chapter. If we talk about the natural vegetation in India, there are number of species included in India, just like 47,000 plant species, 10th in the world पर 10th पोजीशन पर काउंट की जाती हैं एंड 4th पोजीशन इन एशिया. 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे भारत में पाए जाते हैं. इट इज़ 6% ऑफ वर्ल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. 89,000 एनिमल स्पीसीज़ हैं एंड 1,200 बर्ड स्पीसीज़ हैं. दैट रेशो इज़ ऑफ 13% ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड्स स्टॉक. 2,500 फिश स्पीसीज़ हैं. That is included in 12% of world stock. 5% से लेकर 6% is amphibians, reptiles and mammals are found in India. What is virgin vegetation? Virgin vegetations क्या होती हैं? What is virgin vegetation? If we talk about virgin vegetation, a plant community which has grown naturally. वह plant community जो naturally grown हो जाती है without any human interference and has been left undistributed, जिसको हम undisturbed छोड़ देते हैं, जिसमें हम disturbance create नहीं कर सकते, that is known as virgin vegetation. इसको हम long time तक humans being के interference से अलग रहती है ये vegetations, इस कारण से इसको हम virgin vegetation कहते हैं. Which factors are related or responsible for the huge diversity in flora and fauna kingdom? Here are two terms, flora and one is flora and second is fauna. Flora include all vegetations that is grown on earth is included in flora, and fauna we have included all wildlife kingdom. Factors, relief features, land and soil. These are the factors that affect the flora and fauna in any place. Nature of land influence the type of vegetation. लैंड की नेचर पर डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाएगी. फर्टाइल लेवल ऑफ लैंड इज़ ग्रेजुअली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर. फर्टाइल लेवल लैंड का हमेशा एग्रीकल्चर के रूप में इंक्लूड किया जाता है. अनडल्टिंग और रफ टेराइन एरियाज वेयर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स डेवलप गिव शेल्टर टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. ऐसे एरियाज जो रफ टेराइन रीजन्स कहलाते हैं, ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स के रूप में इंक्लूड किए जाते हैं. दीज आर द होम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट, क्लाइमेट. टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि किस एरियाज में किस तरह की वेजिटेशन होगी या वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी. कैरेक्टर एंड एक्सटेक्स्ट ऑफ वेजिटेशंस आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर along with humidity in air. In this section we include humidity in air, precipitation and soil. On the slopes of Himalayas and the hills of peninsula above the height of 915 meters, the fall in temperature affects the type of vegetation. जो टेम्परेचर में गिरावट होती है उसी पर डिपेंड करता है कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी. and changes it form tropical and subtropical temperate and alpine vegetation. यही कारण है कि अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में we observe different types of vegetations and wildlife. Soil. Different types of soils provide basis for different types of vegetation. Types quality भी different types की vegetations को prefer करती है. Sandy desert soil support cactus and thorny bushes. Just like example के रूप में sandy desert soil cactus और thorny bushes को support करती हैं. Wet, marshy, deltic soil support mangroves. दलदली इलाके के जो मैनग्रोव्स जंगल होते हैं ये आपके डेल्टिक वेजिटेशन के रूप में ऑब्जर्व किए जाते हैं. द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कन्फीरियस ट्रीज.
हिल स्लोप्स एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल वेराइटी के कारण कन्फिरियस ट्रीज पाए जाते हैं. फोटो पीरियड, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस. सन की रेज किस एरियाज में किस लिमिटेशन तक पहुंच पाती हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी. जस्ट लाइक differences in latitude, altitude, season and duration of day, it's all depend on the rays of sun. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. Those areas which have gained long duration of sunlight, where there we can see that faster growing of vegetation can be observed. Next factor is precipitation. In India, the advancing southwest monsoon and retreating northwest east monsoons bring in almost entire rainfall. भारत में डिफरेंट मानसूनी विंड्स के कारण रेनफॉल ऑब्जर्व किया जाता है. एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन. All those areas which have heavy rainfall where we can observe the different dense vegetations as compared to less rainfall areas. Why are forest important for human beings? Different activities के कारण forest human beings के लिए important होते हैं. They are renewable resources, play major role in enhancing the quality of environment, modify local climate, control soil erosion, provide livelihood for many communities, offer panoramic and scenic views for recreations, control wind forces and temperature and causes rainfall. All these are factors which helps in importance of forest. Regulate stream flow, support a variety of industries, provide humus to the soils and provide shelter to the wildlife. India's natural vegetation has undergone many changes. If we observe India, here natural vegetations are undergone many changes, but there are various factors for this reason. The growing demand for cultivated land, डिफरेंट लैंड जो कल्टिवेटेड लैंड है उसकी डिमांड्स लगातार अलग अलग एरियाज़ में बढ़ती जा रही है. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ different categories lands is utilizations is increasing here. You can observe these different utilization of land in these pictures. What is an ecosystem? All the plants and animals in a given area are interlinked. All the plants which are survive on the earth are interlinked and interdependent on each other, as well as the physical environment forming an ecosystem. इनके इंटरलिंकनेस के कारण ही एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटरगल पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम का एक इंटरगल पार्ट माना जाता है ह्यूमन बींग्स को. डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना. वी हैव रीड द टू टर्म्स फ्लोरा एंड फोना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स? प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन or period listed by species and considered as a group. फ्लोराज में हम काउंट करेंगे ऑल प्लांट्स कैटेगरीज जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में निश्चित टाइम पीरियड के दौरान पाई जाती हैं डिफरेंट स्पीसीज के रूप में. फोनाज में स्पीसीज ऑफ एनिमल्स वी कैन इंक्लूड इन द गिवन एरिया. गिवन एरियाज में जो भी वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी डिफरेंट स्पीसीज के रूप में, वो उस एरिया की फोना के रूप में काउंट की जाएगी. ए नोट ऑन द इंडियन फ्लोरा. इंडियन फ्लोरा के रूप में हमने अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था. जो रेशो है वो डिफर कैटेगरीज में काउंट किया जा सकता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस स्लाइड्स, सो यू कैन रीड दैट सेक्शन फ्रॉम देयर. Flora ranges from one found in the tropics to the Arctic region due to the country's varied relief. All factors that are working in ratio for different flora and fauna species. Most of Himalayan and peninsular regions are covered with indigenous vegetation. अगर हम ऑब्जर्व करें हिमालयन रीजन इंडिया का एंड पेनिनसुलर रीजन डिफरेंट इंडिजीनियस वेजिटेशन से भरा हुआ है. इंडिजीनियस जो कि भारत की ही प्रजातियों के रूप में डेवलप हुई हैं. दीज स्पीसीज आर फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ये स्पीसीज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में और थार डेजर्ट्स में पाई जाती हैं.
Owing to the destruction of forest for agriculture and industrial development, several plants are facing extinction. लेकिन ये प्रजातियां लगातार ख़त्म होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. एग्रीकल्चर लैंड के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जंगलों को काट कर इन एरियाज को डेवलप किया जा रहा है. ए वेजिटल कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज़ नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस. और कई मायनों में जो नेचुरल वेजिटेशन हमें दिखाई देती है, कुछ एरिया वहाँ पर ऐसा भी है जो रियल सेंस में नेचुरल नहीं है. एक्सेप्ट सम inaccessible regions like Thar deserts and Himalayas, the vegetation has been destroyed. जो वेजिटेशन है उसको लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अपने बेनिफिट्स के लिए, ह्यूमन ऑक्यूपाई करने के लिए, मीन्स ह्यूमन ऑक्यूपाइड एरियाज के रूप में उनको डेवलप किया जा रहा है. व्हाट आर बायोम्स? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग? बायोम्स क्या होते हैं और इनको ग्रुप करने का क्या बेस होता है? A very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animals life is called a biome. वह एरिया जो कि एक लार्ज इकोसिस्टम को फोर्स करता है, फेस करता है वेजिटेशन और एनिमल्स लाइफ के रूप में, उसी को हम एक बायोम के रूप में डिफाइन करते हैं. प्लांट्स फॉर्मेशंस आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग एंड आइडेंटिफिकेशन. प्लांट्स फॉर्मेशन को हम इसमें यूज़ करते हैं उसकी ग्रुपिंग के लिए और आइडेंटिफिकेशंस के लिए. लिस्टेड इन ऑर्डर टू अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर एंड हीट. द 5 प्रिंसिपल बायोम ऑफ द वर्ल्ड आर. 5 बायोम्स के रूप में वर्ल्ड में हम ऑब्जर्व करते हैं फॉरेस्ट, सवानास, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एंड टूंड्रा रीजन्स. ऑल दीज आर बायोम्स ऑफ द अर्थ इन द वर्ल्ड. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिक्वायर रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर्स, वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन. यहाँ पर जो रिक्वायर रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर होता है और ड्राई सीजन, वेरी शॉर्ट ड्राई सीजन यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है. रेनी पार्ट्स के रूप में वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आसाम, तमिलनाडु कोस्ट आर इंक्लूडेड इन दिस एरियाज. ट्रीज रीच great height. Due to heavy rainfall, the trees are of great height here, over up to 60 meters or even more. Since the region is warm and wet throughout the years, it has luxuriant plant. यहाँ पर luxuriant plant पाए जाते हैं all categories के, just like trees, shrubs, creepers. Evergreen forest, as there is no definite time for trees to shed. क्योंकि evergreen forest में लीव्स को गिराने के लिए, पत्तियों को गिराने के लिए कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता है. और यहाँ पर ह्यूमिडिटी के कारण, ग्रेट ह्यूमिडिटी के कारण जो लीव्स होती हैं वो थ्रू आउट ईयर्स ग्रीन रहती हैं पेड़ों की. कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज आर, यहाँ पर जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड चिनकोना. कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं एलिफेंट्स, मंकीज, लीमर, डीर. वन हॉर्न राइनोज फाउंड इन जंगल्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. Plenty of birds, bats, sloths, scorpion, snails are also found in these regions. We can observe a canopy in these regions. Forest canopy यहाँ पर पाई जाती है, घने जंगल देखे जाते हैं. You can see in these pictures. Tropical deciduous forest. यहाँ का required rainfall 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है. मॉनसून फॉरेस्ट के रूप में ये जाने जाते हैं. वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट भारत के माने जाते हैं. ट्रीज शेड देयर लीव्स अबाउट 6 to 8 weeks in the summer. On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. Common animals जो यहाँ पर पाए जाते हैं, these are lion, tiger, pig, deer and elephants. Other huge variety of birds, lizards, snakes, tortoise are also found in these regions. You can observe the pictures of moist deciduous forest and then dry deciduous forest here. Tropical thorn forest and shrubs. Tropical thorn forest and shrubs require less than 70 centimeter rainfall. Found in semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh और हरियाणा. Vegetation consists of thorny trees, bushes, axes, cacti, palm and Eurobase. Trees are scattered and have long roots pertaining deep into the soil and spreading in the radial pattern to the fine water. यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जो रूट होती है वो अर्थ के डीप तक पाई जाती हैं, बिकॉज दे स्प्रेड
spread their roots in the long deep of the earth due to gain the water from the ground of water land. Streams are succulent and conserve water. Common animals found here: rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses, and camels. Thorn and shrubs vegetations you can observe in this picture. मैनग्रोव फॉरेस्ट. मैनग्रोव फॉरेस्ट, इनको हम दलदली पेड़ भी कहते हैं. दलदल के एरियाज में ये पाए जाते हैं. इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, मड सीड्स गेट अकोमुलेटेड सच कोस्ट. यहाँ पर जो मड का स्टोरेज होता है उसके कारण यहाँ पर दलदली एरिया बन जाता है. डेंस मैनग्रोव्स आर कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर. यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जड़ें पानी के अंदर डीप तक पाई जाती हैं. फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी. सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. यहाँ पर सुंदरबन ट्रीज इनके एग्जाम्पल के रूप में जाने जाते हैं. अदर प्लांट्स हैं पाम, कोकोनट, केयर, एगर. फेमस एनिमल्स फाउंड हियर इज रॉयल बंगाल टाइगर. कॉमन एनिमल्स फाउंड टर्टल्स, crocodiles, gharials and snakes. You can observe the pictures of these trees here. You can see that the roots of these trees are submerged in the water. Tidal forest or mangrove forest. Tidal forest you can observe in this picture. Mountain forest. Common animals found in mountain forest are Kashmiri stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrel, saggy, horned wild, ibex, bear, rare red panda, sheep, goats with thick hair. ये features हैं we can observe on the mountain forest. These are the mountain forest pictures here. Name the tribes that use the alpine grassland for extensive grazing. जो tribes use करती हैं grasslands areas को, Gujars and Bakrawals are the tribes here. This is the picture of these tribes. What are endangered species? Endangered वो स्पीसीज जो लगातार खत्म होने के खतरे में हैं. A large number of birds and animals are in danger of getting extinct. बड़ी संख्या में बर्ड्स और एनिमल्स की कैटेगरीज ऐसी हैं जो लगातार डिस्टिंक्ट होने को, खत्म होने की कगार पर हैं. These are called endangered species. इन्हीं को हम endangered species कहते हैं. एग्जाम्पल के रूप में साइबर क्रेन, साइबेरियन क्रेन जो है endangered species है. This is flamingo. Mention the wildlife found in Ladakh. लद्दाख में पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ कैटेगरीज में याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स, तिब्बतन एंटीलोप, बैरल्स, वाइल्ड शिप एंड क्यांग. द आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड्स, रेड पांडा इन सर्टेन पॉकेट्स यहाँ पर पाए जाते हैं. दिस इज द पिक्चर्स ऑफ these different animals. डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. क्या डिफरेंस होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन द एरियाज विद रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर. यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर रेन होती है. बट इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट द रेशो इज 75 to 100. फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड foothills of Himalayas, Jharkhand, West Odisha. These are found in rainier parts of peninsular plateaus, Bihar, Uttar Pradesh. Important species: teak, bamboo, sal, sesam, kher, kusum, arjun, mulberry, sandalwoods. There are open stretches in the which teak, sal, peepals, neem, other trees grow. A large part of this vegetation has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. What influences the kind of vegetation found in the mountains? Mountains में पाई जाने वाली vegetation को कौन कौन सी influences हैं जो प्रभावित करते हैं? The decrease in temperature,
with increasing altitude leads to the corresponding change in the natural vegetation. There is a succession of natural vegetation belt in the same order as we see from the tropical to टूंड्रा रीगन. हमें ये डिफरेंसेस देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल से टूंड्रा रीगन तक. द जो डिफरेंसेस हैं, डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना. Periodic survey and census of plants and animals are undertaken to find out latest status and trends in this direction. To conserve the forest and wildlife, we have to take periodic surveys. According to time, Project Tiger and Project Rhinos were undertaken to save them and getting extinct. डिफरेंट वेराइटीज़ एनिमल्स स्पीसीज़ को नष्ट होने से बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनोज. देर आर 16 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेवलप की गई. बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया. व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स? बायोस्फीयर रिजर्व्स किसे कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज where every plants and animal species will be protected. वो एरियाज जहाँ पर नेचुरल हैबिटेट के रूप में सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रजातियों को प्रोटेक्ट किया जाता है. द मेजर गोल ऑफ सेटिंग अप सच रिजर्व्स इज टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटीज ऑफ क्रूशियल नेचुरल इकोसिस्टम. जो हमारा जटिल नेचुरल इकोसिस्टम है उसकी डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को प्रिजर्व करना इसका टारगेट होता है. मेजर ऑब्जेक्टिव के रूप में टू कंजर्व एंड मेंटेन डाइवर्सिटीज एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेचुरल हेरिटेज, टू प्रमोट रिसर्च एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग. नेम द बायोस्फीयर रिजर्व्स. बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में हम ऑब्जर्व करेंगे नीलगिरी एट ट्राई जंक्शंस, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. नंदा देवी उत्तरांचल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल. This is the list of different biosphere reserves in India. You can observe this list. This is the picture of Nilgiri biosphere, and this is the picture of Nilgiri Tamil Nadu junctions, Nanda Devi Uttaranchal, Nakrek Meghalaya, Great Nicobar Andaman and Nicobar Islands, Gulf of Mannar Tamil Nadu, Manas Assam, Sundarban Delta West Bengal, Simplipal Odisha, Dihang Dabang Arunachal Pradesh, Panchmari Madhya Pradesh. Where are the following animals found? ये एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एलिफेंट्स इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला. राइनोस इन स्वैम्पी एंड मर्सी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. लायंस इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. टाइगर्स इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीगन्स. Camels in Thar deserts and wild ass in run of Kutch. These are the pictures of these animals here. You can observe these beautiful pictures. Why are species of animals facing a major threat to extinction? इन species के ऊपर खत्म होने का खतरा क्यों है? First reason is human activities hunting for greediness, pollution due to chemical and industrial waste, introduction of alien species, reckless cutting of forest. These all are the main reasons by which these species of animals and wildlife is being extinct. Steps: 14 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. 4 out of these, namely Sundarbans, Nanda Devi, Gulf of Mannar and Nilgiris, have been included in World Network of Biosphere Reserves. Financial and technical assistance is provided in many botanical gardens. Project Tiger, Project Rhino, Project Great Indian Bustards are also launched as a developmental projects in India. This is the ratio
of area percent in different state. This is the map of different types of vegetation found in India. You can observe and find out the area with the help of legend. मेडिसिनल प्लांट्स, वो प्लांट्स जो दवाइयों के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं प्लांट्स के रूप में, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में जानी जाती हैं, जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार. You can read these sections and find out the benefits of these medicinal plants here. This is the map of different national parks and sanctuaries here. You can observe these areas with the help of this legend. So students, this chapter is completed here. This chapter's video will help you to complete your project, and by reading this chapter very carefully, you can complete your objective worksheets given to you in your